In this video, let us talk about the topic logarithms. देखो, every positive number, say capital N, can be expressed in exponential form. For example, if we have a number 25, this can be written as 5 square. Now, कभी भी अगर हम a raised to x के फॉर्मेट में किसी नंबर को लिखते हैं, so this is called exponential form. A raised to x is equals to n. So this is called exponential equation. Now, so अगर इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करके log के हेल्प से लिखें, so what happens is we write it in the form log n base a is equal to x. So this is called logarithmic form. सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि log को लिखने का तरीका क्या है. ये जो नंबर n है, this is called argument, and this number here a is called the base. So basically, when we write log, there is something which we call as argument, और नीचे यहाँ पे एक base लिखा जाता है. So this is how we represent logarithm. Now, there is a relation between exponential form and logarithmic form, and we can convert one form to another. So let us try and understand how we convert exponential form to logarithmic form. So if suppose we have 5 squared is equal to 25, तो अगर हम इसको log की मदद से लिखना चाहेंगे तो we will write log 25 base 5 and this is equals to 2. Actually, ये जो log है इसको अगर हम समझने का एक दूसरी तरह से ट्राई करें ना, तो we can write what power of base is argument. मतलब in this case, what power of 5 is 25. So clearly we can say the answer will be 2, and that is what we have here. So for example, if we take a question which says log 1000 base 10. So what is this actually? So this is what power of 10 is 1000, and clearly the answer is 3, and that is the answer to this question. And similarly, let us take another question, and suppose here it is asked log 32 base 2. So what power of 2 is 32? So the answer clearly is 5, and that is how we get the value of log. तभी आपको समझ आया होगा कि log is so very important. और अगर हम इस इक्वेशन से log हटाने की कोशिश करें, so we can write it in the manner 2 raised to 5 is equals to 32. मतलब बेस को अगर हमने राइट में शिफ्ट कर दिया तो 5 becomes the exponent or the power of 2 and log is removed. So in general, अगर हम कभी लिखते हैं log a base b equals to x and we want to remove the log, so we will take b to the right और हमारे पास आ जाएगा b raised to x is equals to a. So this is the conversion of logarithmic form to exponential form. This form we call logarithmic form, and the other form is called exponential form.
Now here we have some basic points for logarithm. तो अगर हमारे पास log a base b दिया है, तो just note this is an important point. For log to be defined, argument जो कि यहाँ पे a है, this should be greater than 0. Base which is b here, this should also be greater than 0 and b cannot be equal to 1. तो ये तीन कंडीशन हमेशा फॉलो करना है. अगर ये तीन कंडीशन फॉलो नहीं होता है, लॉग विल नॉट बी डिफाइंड. तो सपोज कभी हमारे पास अगर क्वेश्चन आ गया log 10 base 1 की वैल्यू क्या होगी, सो वी कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज नॉट डिफाइंड. सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log minus 100 base 10, so the answer is not defined. This is not defined. This is absurd basically. तो ऐसे हम नहीं कह सकते. These three conditions are must. कभी भी हम log लिखेंगे तो इन तीन conditions को हम हमेशा apply करेंगे. Now let us look at some of the principal properties of logarithms. तो सबसे पहले point number 1, log a base m plus log b base m, this is equal to log ab base m. अगर log a और log b को हम ऐड करते हैं and if the base is same, then log के अंदर a and b gets multiplied. Second point, log a base m minus log b base m. So this is equal to log a by b base m. So this is the second point. Now dear students, all of these have some proof. We can prove them very easily. But abhi these are actually very basic. So we will skip the proof for now. If proof is required, you can let me know in the comment section and I'll post a video on the proof of these properties. Now let us say we have the third point and it says log a raised to power x base m. अगर आर्ग्यूमेंट का कुछ पावर होता है ना, so x goes in front of log and what we have is x log a base m. और जब हम ये सारे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट और बेस की कंडीशंस है, दैट इज आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1. इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखा गया है और इनको हम हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखेंगे. नाउ फर्दर लेट अस गो टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. नाउ हियर वी हैव log a एंड m का पावर है y, मतलब बेस का पावर y है. तो जब बेस का पावर रहता है तो वो भी बाहर आ जाता है, बट वो डिनोमिनेटर में बाहर आता है. एंड व्हाट वी हैव हियर इज 1 by y log a base m. So these are the four important properties. Now let us discuss base change theorem. So according to this, अगर हमारे पास कभी log a base b दिया हुआ है तो what do? We will write it as log a base c upon log b base c. मतलब हमने अपने पसंद का कोई सा भी बेस सेलेक्ट कर लिया और लॉग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. फर्दर तो लेट मी से दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी. सेकेंड फॉर्म, log a base b can be written as 1 by log b base a. So this is actually very simple. If you can take the help of property A, you will be able to prove property B very easily. And further, we have another base change property or base change theorem, according to which log A base B को हम लिख सकते हैं log
a base c into log c base b. So एक नया बेस हम लेके आते हैं और ये बेस नेक्स्ट लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाता है एंड वी विल मल्टीप्लाई दीज टू लॉग. फर्दर सपोज वी वांट टू have three factors, so this can also be written as log a base c into log c base d into log d base b and so on हम लोग लिख सकते हैं. So these are three very important base change properties. Now another very important property that we have is property number 6, according to which a raised to log n base a. ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर a के पावर में log है और इस log का बेस सेम है, what I'm trying to say here, अगर ये दोनों नंबर सेम हैं, so this becomes directly equal to n. This is a very important property. Then we have property number 7, which says a raised to log b base c. अब यहां पे a के पावर में log b base c है, so what we can do is we can interchange these two numbers. मतलब b यहां पे आ जाएगा और a ऊपर चला जाएगा. So this can be written as b raised to log a base c. Now जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है, all these properties are very easy and they can be easily proved and they are very very important. You must always try to remember these 7 properties. So that is all that we have in this video, students.